Welcome to GATE 2021 Conclave of Electrical Engineering. In this video, we will talk about the core electrical subjects. Machine by Murli sir, Rajan and Roshan Kumar. Analog by Mr. Rajkumar and Digital by Ramesh sir. तो जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करना है, डिफ़िकल्टी लेवल से लेकर के हर चीज़, हर वो एंगल जो एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है उनको कोशिश करते हैं समझने की। तो दोस्तों आइए टूर लेते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। Hi dear students, we'll have a discussion today on GATE 2021, okay, for electrical engineering course. What is the syllabus change for analog electronics subject, especially I'm talking about analog electronics, and how the weightage of the marks from previous years, and which topics has been omitted from the previous year and which topics has been added. They're all things we are going to see in this slideshow presentation. Let us see the first slide. This is my introduction, first I am giving. My name is Addada Rajkumar, an expert faculty in analog electronics and MEDICI faculty since from 10 years. Okay, 5 years of extra experience in a university colleges. So with this total 15 years of experience in teaching for GATE and ESE students. The next slide, you can see, this is the syllabus of your analog electronics. Let us have a short discussion on the syllabus what he has given. If you see the first topic he has given, simple diode circuits. Simple diode circuits is nothing but how the DC circuit problems to do. In DC circuits we have two types of problems. One is a single branch, one is a multi-branch problems. These questions you do perfectly for the simple diode circuit analysis, which is not concerned to AC analysis, it's concerned to DC analysis problems. Based on your networks like KVL, KCLs, we can solve these problems. So this is one important topic you have to complete, practice. The next we have is clippers and clampers. Clippers, clampers are the basic applications in analog electronics which are most widely used in communication field. Clippers are nothing but which will clip the signal, AC signals when you apply. And the second we have is a clamper techniques. Clampers are nothing but the signals it will pull up or pull down. Clampers is not that much tough topic, it's very easy for the student to understand, but clippers are something different for you because they have so many model techniques. So clippers you must be very perfect in competitive exams, okay? These three topics please try to practice well. And coming to the next one, we have rectifiers. Rectifiers is also a very simple topic, I can say. One of the fundamental topic for an electrical engineer or an electronics engineer, because this topic we'll try to learn in electrical engineering, not only in analog electronics, we'll try to learn in power electronics also. So it is not a big tough topic for the student to study. When you study rectifiers, don't study filters because he has restricted to rectifiers only. So filters don't waste the time in studying. For ESE, we have to study the filters also. But here for GATE, especially for GATE, please study up to rectifiers. With this, the diode part has been completed, but one thing please remember, he will never mention Zener diode, a special topic. But you have to study compulsory that extra topic. So what is the extra topic you have to add here in the subject is Zener diode. You have to study Zener diode. This topic please, my sincere advice, please try to study that topic also. Because the previous years if you see, there are some questions based on Zener diode. Because a clipper cannot be done only by diodes, PN junction diodes, it can be done by Zener diodes also. And you may get some simple regulator questions also. So Zener diode is an extra topic you have to learn according to the syllabus pattern. Okay, so I hope this one topic. Next, coming to amplifiers. In amplifiers, generally we have two type of things we have to study. One is biasing concepts, one is small signal analysis called as AC analysis we can say. Biasing means DC analysis. In that biasing part you have to complete. For amplifiers is nothing but in analog we have MOSFETs, we have BJTs. BJT wise you have to study the biasing separately. MOSFET wise you have to study separately. In MOSFET we have two types. One is depletion, one is enhancement. You have to study both the things. Perfectly you have to study both the things. After that, AC equivalent circuit, next topic. AC equivalent circuit is nothing but small signal modeling. By using small signal modeling, how you can replace your transistors BJT and MOSFET
and how you can find out the characteristics of the amplifier, like input impedance, output impedance, voltage gain, current gain. Every year you will see some questions based on this. Who will be perfect on this calculation part for 4 different types of amplifiers: common emitter, common base, common collector. Like that in MOSFETs we have common source, common gate and common drain. These are all the amplifiers you must be perfect. This sort of information you have to practice well. Okay, amplifiers. And the last final touch, you give the concept to frequency response of the complete amplifiers, what you studied. Frequency response is nothing but low frequency, high frequency. Low frequency wise, how the analysis will be. High frequency wise, how the analysis is also most important topic in competitive exams. For GATE students, it is a very, very important topic called as frequency response of a particular amplifier. What you study is common emitter or a common source amplifier. Generally, we must know the frequency response. Next, we have oscillators and feedback amplifiers. This is a separate module. Oscillator is a separate module. Feedback amplifier is a separate module. Feedback means here negative feedback amplifiers, because oscillator itself is a positive feedback amplifiers. Okay, we cannot say positive feedback amplifiers. We can say positive feedback oscillators. We can say, because a negative feedback will give stableness, an oscillator will give unstableness. Oscillators wise, we have 4 topics generally we study. One is RC phase shift, Wien bridge, Hartley, Colpitts. But most of the times in GATE exam, we got which important topic is Wien bridge oscillator is most important topic. Wien bridge. So this oscillator you try to practice well, which is called Wien bridge oscillator. So many times he has asked these questions. So let us have good knowledge on Wien bridge oscillator. The next we have feedback amplifiers. Feedback is nothing but we have to study about the topologies. You must be perfect with topology designs. Topologies are nothing but we have voltage series, voltage shunt, current series, current shunt, how to design the amplifier in 4 categories. That study is most important in your syllabus. After completing the topologies, after completing the oscillator, where mainly Wien bridge oscillator techniques, you go for next directly to syllabus practice on operational amplifiers. Directly you can enter into operational. Operational amplifier is not a discrete amplifier, it's an integrated analysis. In that, first you study the basic things called how it will behave the characteristics. How the graph will come for op-amp. What are the characteristic behavior? Maybe sort of questions may come from characteristics. There will be some mechanisms like virtual ground, comparator. These are all things we will study by characteristics. After that, we have sort of applications by op-amps. Just you go for applications. We have 2 types of category of applications. One is linear, one is non-linear applications. Don't leave one single application also in op-amps, because every year they'll concentrate compulsory questions on op-amps. So you should be very, very strong in op-amp concepts. Maybe you can leave differential amplifiers. Maybe differential amplifier questions they may not ask you, but op-amp wise compulsory they'll ask you good questions. Differential amplifier, it takes hardly 1-2 hours to understand it, because it is the input stage of op-amp. Just have a good study of differential amplifiers. After that, directly go to the practice of op-amp. Application part is more important for practice. Lastly, we have a single stage active filters. He said a word particularly, single stage active filters. Active filters are nothing but high pass, low pass, band reject, all pass, this type of things. In previous GATE papers, they have given only single stage filters. Single stage is nothing but only first order filters you can expect. But single stage active filters. But in this new pattern of GATE syllabus, they started to apply 2 extra topics they have added. One is called Shalansky, one is called Butterworth. Don't get tension, these are not very big topics. These are 2 topologies, we can say, which are widely used in digital signal processing. And these 2 topics will give a weightage for you for GATE exam. I'm thinking when he is adding a new topic means, maybe he will concentrate a question on that. That's why please have a good knowledge on this part, active filters, up to Butterworth. This extra topic you take care more, because you can expect a question on active filters in the next coming GATE 2021, I'm expecting. And VCO timers, I think every time it is given in the syllabus, previous year also, but no question is coming on timers. Till now, I have not seen a 555 timer question,
But for EC students, every year they will ask you. But for electrical students, mainly 555 timer, they are not asking. But surprisingly, they may ask you this year. That's why have a focus on these two topics also. That is, one is VCO, voltage control oscillator, one is timer. Have a look on the two topics. But main concentration you do on active filters, you study well, which is one of the important topic in your op-amps, operational amplifiers. This is the complete pattern of your syllabus. After completing this, we'll try to see the next slide. What are the topics added? What are the topics are removed in this category? Added topics are your Shalon key and Butterworth. Only two topics extra added in analog electronics. What is the topic is removed is only one topic, simple topic, characteristics of diode. That is your PN junction diode characteristics they have removed. Other than that, the syllabus is same, what we studied in previous year and present year. The next one, the next slide, you can see the presentation of 5 years back if you go, what are the gate papers and how the marks they have been given for that. How the weightage of analog electronics. 2020, if you see, 2 marks for 1 mark he has given, 2 marks he has given for 2 marks. Latest 2020 previous year gate paper, you can expect here he has got for 6 marks he has given. So that means the weightage has been increased a lot. Now present years, analog electronics is taking a weightage of 6 marks in your gate paper. So don't leave analog electronics subject as an electrical student, I'm telling. But syllabus wise, it is a lot of syllabus in IES, not for gate. Gate wise, easily you can get through the analog electronics portion. But for IES, you have to take more time to study. For gate, it is not required. And 2019 also same story. The weightage came 6 marks. So 2019-2020 is the best for getting more marks for analog electronics. The toughness of the paper is not much high. It's a moderate paper in analog electronics. The basic formulas wise, the problems will be based on that. So it is not a tough problems for you. If you can study properly the questions, easily you can attempt the analog questions. 2018, maybe you got 3 marks. 2018 only 3 marks. 2017 we have set of questions, set 1 and set 2. In that we got 2 marks only for 2, means 4 marks weightage we got. Coming to the 2016, we got only 1 and 1, means 3 marks. Here we got only 1 mark. That means the weightage, if you go from 2016 to 2020, the weightage is increasing for analog electronics. If you lose at least 3-4 marks also in a gate exam, your rank will be decided. I think you can understand where is your rank. So analog electronics don't live in electrical engineering course. Most of the student will be weak on that. You just dominate that persons by studying analog electronics properly. See the next, I think the average of 5 years marks we have is 4 marks. We are expecting in analog electronics. The maximum we got is 6 marks. The maximum weightage is 6 marks, but on an average, you may get 4 marks in analog electronics per gate. The next we have is presentation. So we have some questions on MCQ. So what are the category of the questions? How they will ask you is, one is MCQ. This is one category of the questions they will ask you in gate exams. MCQ is a normal thing. Every gate exam, you are getting the same pattern. Multiple choice questions. In that 4 options will be there. In that which option is correct, you have to choose. Only one option will be correct. If you choose some other option, you will have some negative marking for this. That negative marking is 1/3 of the negative marking. So you lose some marks for this category. Let us see one example for this. I have taken a question for this. For a current shunt topology, MCQ question is like this. For a current shunt topology, the input impedance and output impedance will be how much? Like this, they may ask you a question. This question has been taken from your negative feedback amplifiers, which is in your syllabus. At that time, who knows the answer directly, he will say, for current shunt, this is output, this is input. This is the code language for current shunt techniques. Current means output, which is connected in series. Shunt means input, which is connected in shunt. Shunt is shunt only, but current language is series. Always in networks, you know, any series connected systems will have high impedance. Any shunt connected systems, it will have low impedance. Series means high, shunt means low. That means your output impedance is coming infinite. Input impedance is coming 0. So
What is the answer for this is, input impedance is low, shunt, output impedance is high. Who will correct this answer? He will get 1 mark if it is a 1 mark question. But by chance some person has been tick this problem as A, then automatically he will lose 1/3 mark. You have the negative marking for this. So in 1 mark you lose 1/3 of the mark for it. This is called MCQ category. Coming to the next one, we have one more special type which is coming in GATE 2021 only. He included this one called MSQ. This is a special category for you. MSQ is nothing but multiple selected questions. It is also just like an objective question having 4 options. In that you can have multiple choice of answers. I think this implementation, why they have done, I am thinking that the student who is very serious to prepare for the GATE exam, for that student it is very beneficial for him. The student who is not is randomly, if he is taking the options, okay, sometimes the answer will be correct. But who will have good subject knowledge, they can only attempt this type of questions. But perhaps there is no negative marking for these questions. We have only here, for partial marking, you have 0. That means if you have 2 options are correct, A and B options, but you selected only A, B you have not selected, then there will be no mark for that. You will get 0. But you have to select compulsory A, B, then only you will get the complete mark. It can be 1 mark question, it can be 2 marks here also. We will see one problem based on this. Suppose MSQ question will be like this. By chance they will give questions in formula based questions, I am expecting. Because problem wise, if they give only one option will be selected, because in a problem we will get only one answer. We cannot show variety of answers. But MSQ questions will be related to theory questions or related to a concept of formula based questions. Please understand that. So in that multiple formulas I can create and I can ask you the question. The voltage gain of a common emitter amplifier. Really speaking, minus GM into RC is also correct for common emitter amplifier, the gain. And minus RC by RE is also correct, because GM we can write it as 1 by RE. So both formulas are correct. So both answers are correct for A, B. But one more option, if you see, this is also correct. It is coming from hybrid parameter model. Like the different choice you have to see. But last one is wrong because you have a positive sign. A common emitter will have 180 degrees phase shift. According to that, A, B, C are correct. Therefore, who will attempt this answer? Total A, B, C. Then he will get the 1 mark or 2 marks. But by chance if you attempt this one, you will get the 0 marks. Therefore, you will not have any negative marking, perhaps you will have 0. Coming to the next one. This is my category number 3 of asking question in GATE. That is called numerical answer type, called NAT. Numerical answer type. This is just based on fill in the blanks. There will be no options will be given like multiple choice, but there will be a fill in the blank where you have to calculate that answer and you have to tell. Sometimes the decimal answer, if it is coming by virtual calculator, you can solve in your GATE. The decimal value, how much decimal you require, that also you will write in the brackets. Let us see that question, sample question. This is the NAT question. Some question I have prepared. A common source amplifier with some source degeneration having RD resistance, RD, RS, GM, some values resistance. What is Z0 is asking. If it is a common source amplifier, generally, common source amplifier, I don't want to discuss complete problem, just I'll give the formula for you. Your output impedance will be RD parallel to, there will be some load resistance, RD parallel to, its source degeneration formula is RD plus RS plus GM times of RD into RS. This is the internal transistor impedance. This is the external transistor impedance. Both are parallel, will give the output impedance. Correctly see the values here. RD he has given 100K. Small RD he has given 10K plus 10K. These two answers are close to each other he has given. So that exact answers he want to expect from you. Plus GM 1 millisiemens into 10K into 10K. If you see this answer, if you write this exact answer only, you are expecting to get the correct value. Why? Because 10K plus 10K milli, this is cancelled, it becomes 100K, this total value. That is 100K
plus 10k plus 10k, this overall value is expected to get 120k. So if any student is leaving that formula based questions, exactly if you don't write, if you leave this 10k, 10k, if you write only 100k, lot of parallel combination difference will come. That's why these questions, you should have more accuracy of doing NAT questions. If 100k parallel to 120k, exactly if you do, the answer is coming some 54.54 kilo ohms. This is the actual answer for this question. But some students who is approximating this formula, he may get suppose 100k parallel to 100k he has done. That means that 20k he has been neglected, for example. Then the answer will come to be some 50k. See that lot of difference, 50k, 54.54k. In NAT questions, the ranges will be like this. 54.10 to 54.75. This is the range they will give, that much accurate range. So you cannot have a range of 54k to 50k, lot of difference, and your answer will be wrong if it is in this, if it is not in this range. So you should be careful when you do NAT questions. Maximum NAT questions will come for 2 marks because exact wise you have to do this type of questions. Okay, relevant to that. Next, there will be no negative marking. That is a one good point. No negative marking for these questions also. Okay, if your answer is wrong, it is 0. If your answer is correct, you will get the mark. Okay, that is one good point about NAT. So finally we have completed all the issues. Thank you. Welcome children, welcome to MADEC Prime, where it is going to launch the GATE 2021 conclave, where we are going to have the most prestigious organization from the MADEC. We are going to get a wonderful opportunity. Here we are going to get GATE 2021 conclave. The most esteemed faculty members here with so much of experience, and the examination pattern and all the practicing the things and the environment point of view and the response by the management point of view and the ranks point of view, everything. This is a wonderful organization. As you know, all the students destination is MADEC only, you know that thing. And this our MADEC is going to now start the conclave GATE 2021, where in this for the electrical engineering students, as far as the digital electronics is concerned, where this is Ramesh having more than 23 years of experience and explaining to you the digital electronics syllabus here, where it is including the combinational circuits and sequential circuits, okay, and multiplexers, demultiplexers, and like that A to D converters, D to A converters, such type of things are there. Actually speaking here, the syllabus point of view, there is not at all any difference in the digital electronics subject is, as far as this subject is concerned. Previously and now also, these are the contents only we are having. Not at all any considerable change, not at all any change we can say as far as the digital electronics is concerned. Okay, right here the added and the removed topics are actually nothing here in this one. Almost same syllabus only. I said no, in the digital electronics like that we are having. And next one, the last 5 years weightage, if you observe in GATE 2020 we are having 1 mark question is 1, 2 marks question is 1, and in 2019 2 marks questions are 2, and 2018 1 mark question is 1 and 2 marks questions are 2, and 2017 1 mark question is 1, 2 marks questions are 2, and 2016 1 mark question are 2 and 2 marks questions are 2, like that. Okay, now here total weightage of marks you can say 5 marks, like that, as far as the digital electronics is concerned. Okay, right. Now here the way of questions we are going to get is multiple choice questions. These are carrying 1 or 2 marks each. These are objective in nature. For a wrong answer in MCQ there will be 1/3 negative marking. Children, here MCQs, as you know, the way we are having the question we are going to ask, and we are having a multiple choice there, and in that ABCD you are going to answer one of them, and that type of MCQs will be there, and for this one 1/3 negative marking will be there. Okay, right. And here one more type of questions is multiple select questions. Multiple select questions in the sense
Okay, these are carrying 1 or 2 marks each in all the papers and selections. These questions are objective in nature and each will have choice of 4 answers, out of which one or more than one choice may be correct. That means here this is not MCQ, this is a MSQ. Okay, here because multiple select type, that means for example ABCD options are there, in that we are going to have more than one will be correct in that. That's why you have to be careful answering these, because not only one answer, more than one answer will be correct there. So those based the question will be there and you have to be careful about it. Okay, now here the numerical answer type also are going to get here. In the numerical type of questions you are going to have 1 or 2 marks in most of the papers, and the numerical type questions generally we used to face such type of questions only here also. This is one more type of questions that you are having. And as far as the digital electronics is concerned, the most important topics will be logic gates based simple questions you are going to get in the electrical engineering, and SOP and POS forms related questions also are getting in these days, like sum of product form and product of sum form, and the conversions from SOP to POS forms. Such type of things also you are going to get. They are going to give the problem in SOP form and they will ask the answer in POS forms. Like that also a very important category. From that also you can get the questions there. And as usually the K-maps, the fantastic simplification logic minimization technique, from that also are getting the questions. And here the multiplexer MUX, yeah, it is the most important topic from the combinational circuit, where you are going to get the questions even from that also. Okay, and here next one, flip-flops. As you know, different type of flip-flops, SR, JK, toggle, D mode, D type of flip-flops, and the flip-flop designing, conversions, based on that also are going to get the questions. Like counters, like in the counters, asynchronous type, synchronous type, and ring counters, based on that also you'll get the objective type of questions there. The 3 categories like MCQ, MSQ, and numerical data type. And from A to D, D to A converters also, like analog to digital converter and digital to analog converter, from that also are going to get the questions. Okay, right. Here, actually speaking, in this organization point of view, the students point of view, it is a number 1 organization where all the students is to trust in. As far as engineering is concerned here in India, the number 1 organization. Why not? What not is there here in the MEDIC? Because of what an experienced faculty and the chairman sir, the B Singh sir, always used to have a direct approach towards the students, and their problems are going to be immediately solved if any of the simple thing is also there. Like that, any of the problem and direct communication will be there with the students from management, which is actually the very important thing required for the students point of view. And ranks, if you observe every year, what a what ranks that you are getting, really wonderful. It's a fantastic organization in that ranks point of view also. And the horizontal expansion of the subject and vertical expansion of the subject, those all the things will be there in our MEDIC organization. That's why don't miss this opportunity, students. By sitting in the home only, you are able to get all the things like this with the most experienced faculty and the most fantastic chairman sir like B Singh sir, and you are going to get all the things from the home only, are going to get these things. That's why don't miss this opportunity, the MEDIC 2021 conclave, okay, for this electrical engineering. Okay, right. Thank you. Dear students, greetings of the day. Myself, Murli Krishna, MEDIC faculty for electrical machines since 2010. I want to give you some important updates for GATE 2021 for electrical machines. We start with the syllabus first. In transformers, it is given single phase transformer, equivalent circuit, phasor diagram, open circuit and short circuit tests, regulation and efficiency, 3-phase transformers, connections, vector groups, parallel operation, and auto transformer. In this, a new word came, that is vector groups. That's why I highlighted like this. Actually, it's not a new term.
When we discussed three-phase transformers previously, it is a non-avoidable topic. We have to discuss vector groups after discussing the transformer connections. That's a compulsory topic. But they specified vector groups. It doesn't make any difference because we will discuss that commonly even though it is not mentioned. In induction machines, three-phase induction machines, principle of operation, types, performance, torque speed characteristics, no load and block rotor tests, equivalent circuit, starting and speed control, operating principle of single-phase induction motors. Exactly the same syllabus, no change at all. In DC machines, separately excited, series and shunt, motoring and generating mode of operation and their characteristics, speed control of DC machines. Here, a word missing, that is starting and speed control. Without discussing starting, which is a basic aspect of a motor, we can't move on to the next concepts actually. You have to know the importance of starting, importance of a starter, everything, their features. That's a common thing. Even though they have not specified, it's a part of the syllabus. You have to think it like that. I'll tell you one more thing after this slide, which is very important. In synchronous machines, cylindrical and salient pole machines, performance and characteristics, regulation and parallel operation of generators, starting of synchronous motors. Here one more word is missing, that is, means I'm comparing with the previous syllabus, word to word comparison. Here there was a word characteristics that is missing here. Missing doesn't have any significance actually because we have to discuss it. Why? Because when we discuss synchronous motors, we have to discuss their performance with load. We have to discuss their behavior with the change in excitation. For a constant excitation, change in load, V inverted V curves, all those characteristics are essentially discussed here. So whether they put characteristics or whether they remove, we have to discuss it. Finally, there is no change in the syllabus, exactly the same. And as I told you, starting is missing doesn't mean that we don't discuss starters. Reason is, I'll tell you after the next slide. And one more thing I want to add, types of losses and efficiency calculation of all electrical machines is a common part. And electromechanical energy conversion principles, that's one part, which you will get rarely in this particular topic actually. Now I want to show you one thing. This is the GATE brochure, IIT Mumbai site. GATE 2021 brochure, you can see that. Organizing Institute IIT Mumbai, this is the brochure given by them. This is page number 26 out of 167 pages. And section 5.2.3. In this section, I have to tell you something like this. They have given design of questions. Like, the questions in a paper may be designed to test the following abilities of the candidates, like recall, comprehension, application, analysis and synthesis kind of things. In that, they have selected some sample questions for the candidate to understand. Different disciplines are there. They have given mechanical, civil also. In that, one comprehension is there. They have selected our DC machine question for that. The question is, a DC motor requires a starter in order to. See, in the syllabus, they have removed the word starting. But in the sample question, they have included that question only. A DC motor requires a starter in order to develop a starting torque. I know you can't see this clearly, so I have made a separate slide for that. This is the document of IIT Mumbai Institute actually. This is the question. A DC motor requires a starter in order to develop a starting torque, compensate for auxiliary field ampere turns, limit armature current at starting, provide regenerative braking. And you know the answer already. When we discuss starting, we first discussed that only. The purpose of a starter is to reduce the starting current. Huge starting current is going to come because at speed 0, when you start the motor, EB will be 0, IA will be extremely high.
So to limit the armature current, we will start. This is the basic purpose we are going to discuss in the regular classes. So this is a very essential thing to be discussed. The purpose of a starter, what are the types of starters, everything. So remember, even though it is not mentioned in the syllabus, some topics are very crucial which need to be worth discussed. For example, in synchronous machine syllabus, you won't see armature windings, you won't see KD, that is distribution factor, pitch factor or winding factors, all these things, but still that is very important topic. In the same way, in induction machines topic, you won't see induction generator. Even though that is not mentioned, it's a very, very important thing. You won't see double cage induction motor, but that is also very important. So some topics are, even though not mentioned, it's a part of syllabus and we know how to deal with that. In the syllabus, in the regular classes, I'll be teaching you all the things which are required for GATE. Even though some topics are not mentioned in the GATE syllabus, worth discussing. Why? Because I have given you a sample example. Starter is not mentioned, but in the sample question, they have given starter question only. And the most important thing is this, out in the entire presentation, this is a worth noting actually, significant slide, that is weightage of marks. This will show you the importance of electrical machines. Being a core subject, they do justice to this. Around 12 marks, average will be 11.7, around 12 marks every year. Last 5 years weightage I'm discussing. 2020, 1 mark questions 3, 2 marks questions 4, total marks 11. 2019, 1 mark 3, 2 marks 5, total 13. 2018, 1 mark 3 questions, 2 marks 4 questions, total 11. In 2017-16, 2 sets were there. In set 1, 2 marks, 1 mark 2 questions, 2 marks 5 questions, total 12 marks. In 16, set 1, 4 1 mark questions, 4 2 marks questions, total 12. If you go to set 2, 1 mark questions 2, 2 marks question 6, 14 marks, and 1 mark question 1, 2 marks question 4, 9 marks. That's a single digit. On an average, if you see in all the recent 11, 13, 11, 12, like that, the average, I have taken all the average, totally 11.71. It's a very good average, which is significant. Now we see one very important thing, that is multiple select questions. This is the thing which is updated in the GATE 2021. We are seeing now pattern of questions. GATE 2021 would contain 3 types of questions. One is multiple choice questions, other one is multiple select questions, other one is numerical answer type. I know you are familiar with multiple choice questions and numerical answer type. This is something new in this particular GATE pattern. MCQ we're discussing, multiple choice questions. They carry 1 or 2 marks. Objective in nature. They have 4 answers. Out of 1 only right answer, only 1 right answer, and you have to pick that. If you pick a wrong choice, there is a negative marking for it. Especially in 2 mark category, negative mark will be 1/3 actually. 1 mark, 1/3. In 2 marks question also 1/3 only, that more negative marking. So you should be very careful when you're solving these negative marking questions. These are multiple choice questions. One example we'll take. In MCQ, I'm giving an example, sample question. Distributed winding and short cording employed in AC machines will result in. When we discuss windings, in DC machines we discuss windings, in AC machines also we discuss winding topic. When we discuss windings, you will be seeing the winding is uniformly distributed type. Why we distribute uniformly means in order to improve the shape of induced voltage, quality must be enhanced. That is the basic thing. Whenever you are distributing the winding, the voltage in the coils cannot be arithmetically added because they are in series. We can't add arithmetically. We have to go for a vector sum. And you know, mathematically, vector sum is always lesser than compared with arithmetic sum. So, there is some reduction in the voltage due to the distribution of winding throughout the stator or rotor, depending on the type of machine. So, we can understand something. Distributed winding will have a reduced voltage as well as the harmonic content also reduced because shape is improved. Second thing, short corded means short pitching. When we short pitch the winding, one of the best advantages or major advantage is the short pitched coil, depending on the short pitched nature,
a particular order of harmonics can be reduced, or overall harmonic content is also reduced. So distributing the winding, short pitching the winding will definitely reduce the harmonics. In the same way, when short pitched coil if you take, again we can't go for arithmetic sum. The coil side's voltage can't be directly added. We have to go for vector sum again. When you go for vector sum, definitely some voltage has been reduced. How much voltage is reduced by distributing the winding? How much voltage reduced by short pitching the winding? We can calculate by using KD, KP factors. So we'll be discussing all those things later. Just I'm giving a sampling, that is, in this question, finally what you have to answer is, you have to pick one right answer, that is, due to distribution and short pitching, the shape is improved, harmonics are reduced, and the side effect is the voltage also will be reduced. So answer is reduction in both EMF, that is voltage, as well as harmonics. So the right answer will be D. You have to select that. Next, multiple select questions. This is an updation here. It carry 1 or 2 marks again. These questions are objective in nature, but they have 1 or more right answers. And what you have to do is, you have to select the correct combination. It's like 4 right will be there, or 3 of them will be right, or 2 of them will be right, or 1 only right also. We don't know that. It depends on the framing of the question. So you have to select the correct combination. Why I'm telling correct combination means, if 3 are right, if you select only 2 of them, you won't be given any partial credit or nothing like that, because 2 answers are right in that, your question is half right, there's nothing like that. All you have to do is, you have to select the right package over there. And remember, there's no negative marking also. That's the best thing here. And mostly you will be getting theoretical aspects in this. Of course, numericals also might come, but mostly you might get theory based questions in this as far as machines is concerned. I'm not telling only theory, numerical also might come, but you should be right with your basics. You should be very accurate in theory and basic actually. Then only you are going to get exactly the right answer in this, because you have to select 1 or more right answers in this. I'll take a sample question to explain you more clearly what I'm talking here. An example for MSQ. A self-excited DC shunt generator driven by its prime mover at rated speed fails to build up voltage. Remember, fails to build up voltage, and it is already operating at no load. What correct reason or reasons can be assigned for this? Number 1, no residual flux in the poles. Number 2, the initial shunt field MMF does not assist residual flux. Number 3, the field circuit resistance is higher than critical resistance. Number 4, interpole connections are reversed. You have to select 1, 2, 3, 4, 1 and 2, 4, 1, 2, 3. These are the options. This is multiple select question sample. Now, when we discuss the voltage buildup of a shunt generator, self-excited shunt generator in DC generator topic, we'll be discussing there are 6 essential conditions in theory. 1, the poles must contain residual flux. 2, the initial MMF must add the residual flux. Then only the buildup will happen. Third one, the resistance of the field winding must be lesser than a critical resistance value. Number 4, the speed of the generator or the primer which is driving the generator, anything, the speed of the generator must be greater than a critical speed. Number 5, the machine should be on no load. No load is the best condition. Mentioned clearly, no load. And finally, the other one is, last one, 6th one is, brush contact should be proper with the commutator. That's the last one. Now, if you see this, what correct reason we have to assign? Correct reason or reasons? No residual flux, yes. No residual flux might make it fail to build up, obviously. The initial shunt field MMF doesn't assist. Yes, it might be the reason. The initial shunt field MF doesn't assist the residual flux. It might be the reason. Just I told you. Next, third one. The field circuit resistance is higher than critical resistance. Yes, if the field circuit resistance is higher than that, obviously no buildup of voltage. So these all are right answers until now. Now, fourth one is interpole connections are reversed. No.
This is a wrong answer. Why means, interpole topic comes in armature reaction. Armature reaction comes with load. When we start loading the machine, in the machine there are some happenings. This armature flux will distort the main flux and produce MNA shift and produce a sparking and produce an unsuccessful commutation. These are all things we discuss in armature reaction commutation topic. Their interpoles will come. Here we are discussing just the buildup of voltage on no load. If interpole connections are reversed or not reversed, the buildup has nothing to do with that. If it is reversed, for example, then where the problem comes if the machine is loaded. In loaded conditions, these problems will come. The combination definitely will not be successful. That will create a sparking, and that the many effects will come after that. So what I want to convey is finally, interpole connections are reversed is definitely a wrong option. But all the three are right. So 1, 2, 3 you have to pick. So the answer is D. Here, no partial credit. That's what I told you. What's the meaning of that? If a person selects 1 and 2, if he simply ignore third one, he don't know the third option is there. If he select 1 and 2, there is 1 and 2 already. See, like that. So if he select one option, for example, then the problem is you won't get any partial credit. You can't argue like because 1 and 2 are the right answers. He can't say like that. Therefore, there is no partial credit. You have to correctly select all the options. That is 1, 2, 3, all the right options combination you have to select, and then you will be given full marks. If you have a wrong answer, there is no negative marking also. If you want to rightly answer this, what is important is you have to be very accurate in theory. All the basics must be right. Next. Numerical questions, numerical answer type. Here also 1 or 2 marks. Answer can be a number or decimal, mentioned up to which decimal places. Here I want to tell you one important point, that is, don't ignore decimals easily. Like in between the question, doesn't ignore. Minimum 3 decimals you consider. At the end only you can round it off if you want it. In between, don't round off. That's what I have written here. So there's no negative marking again. I'll explain this with a simple example. You'll get a clarity on that. I'm taking an example for numerical question. A 3-phase 10 kilowatt 400 volt 4 pole 50 Hz star connected induction motor draws 20 amperes on full load. Its no load and block rotor test data are given below. No load test 400 volts 6 ampere 1002 watts. Block rotor test 90 volts 15 amperes 762 watts. Neglecting copper losses at no load and core loss in block rotor test, the full load efficiency of the motor. After reading this question, the crucial points what I have to note down is, it is given the motor draw 20 amperes on full load and you are asked full load efficiency. The first check what you have to do is the block rotor test which gives you copper losses is conducted at full load or not. You have to check it. If you observe, no, it is not conducted at 20 ampere. The block rotor test is conducted only at 15 amperes. This is the problem or twist in this question. Normally what we think is efficiency is output by output plus losses. In losses there are 2 types. One is friction windage, that is mechanical loss. Other one is the core losses in the stator. That is one category. That can be taken as a constant loss which comes with the no load test. And very importantly, what is given in the question is neglecting copper loss at no load. Because in no load, there's a small stator copper losses which we can't ignore from this wattmeter reading. The wattmeter reading on no load represents a small stator copper losses also. We can't eliminate that from this because R1 is not given. If you're given R1, what you can do is, no load current what is drawn by the motor and R1 is known. So 3I1 square, that R1 if you put, that's a stator copper losses on no load. And if you remove from the wattmeter reading, then that's a pure constant loss. You can say that is stator core loss plus mechanical loss. But as it is mentioned very clearly, neglecting copper loss at no load
you can take directly 1002 watts as, this can be taken as stator core plus mechanical. Finished. Now, this 762 watts is copper loss. Unfortunately, it is given for 15 amperes, not conducted at rated conditions. That's why we can simply adjust it to rated or full load condition. Many of you will have a confusion. What is rated? What is full load? Both are absolutely same. Rated means full load or full load means rated only. So what we have to do is, we have to adjust this loss first. Let us adjust like this. If 15 amperes produce 762 watts, then 20 amperes, because that is the full load current, 20 amperes produce how much? And remember, we are relating current and watts. Watts means power, I square. Power is proportional to I square. So you can't simply relate like that, like V and I proportional to each other. It's not like that. So what I have to do is, if 15 square produce 762 watts as copper loss, 20 square how much? How to calculate the new copper loss at full load means simply this, like 20 by 15 square into 762 watts. Then you will get a number 1354.666. Don't round off in between. Just take up to 3. If you want to take more, you can, but minimum 3 you have to maintain. That's a standard. So take this. So what we can say now is, this is 1354.666 is the copper losses for 20 amperes, that is full load current. Now you can use this number in the losses because you were asked to calculate efficiency at full load. So at full load, the motor output is 10 kilowatt. Already mentioned, the rating of the motor is always taken as output. That is obvious. Now it is very clearly given full load. Means the rating can be taken as full load output as 10,000 watt. So this is 10,000 by output plus losses. What are the losses? Stator core, mechanical, copper. These are the 3 classes. So stator core plus mechanical is 1002 plus, you should not take 762. You have to take the adjusted one, adjusted to rated load, 1354.666. If you calculate this into 100, because you are asked what? Efficiency in percentage you are asked. So into 100, then you will get a value 80.927%. This is the answer. Now we see important topics. We can't say particularly which topic is important. It's very hard to predict. By seeing the previous papers also, it's very hard to predict whether the question comes from this particular topic or not. I'll use a better word. Instead of important topics, topics which you can't avoid, or the topics which you want to emphasize more, concentrate more. Better word is that. Better to concentrate every topic actually. Why? Because every question matters actually for the rank. So I don't suggest you to confine to a particular topic. For example, if you ask what is a very significant topic, we say speed control of DC motor is very important because the DC motors are popular for speed control. It doesn't mean that you will get question only in speed control. You may get question in starters, you may get question in torque calculations, you may get questions in efficiency calculations. Like that, there's no limit actually. So if you think about important topics, I can say the topics which you can't avoid or the topics which you have to give more emphasis when you are revising. In transformers, OCSC test, which gives you a complete analysis, putting equivalent circuit, how to deal with the equivalent circuit, everything.
efficiency and voltage regulation calculations, very important. And auto transformer is also important. And three-phase vector groups. Why I included three-phase vector groups means previously that was a part, we have been discussing that. I'm not highlighting previously, this is very important because it's a part of three-phase transformer which we have to discuss it. But now, as it is specially mentioned in the syllabus, vector groups, I'm giving more emphasis so that you have to twice revise it at the end. The three-phase transformer vector groups, that is a clock method of angle designation, that is 0 degree phase shift, 180 degree phase shift, plus 30 degree, minus 30 degree, all those ones you have to give a revision like, because that has been specially included by IIT Bombay Institute in the syllabus now. Next. In induction, power stages. You should know the power stage of induction motor clearly from input to output or output to input, how the losses are happening. Then you can solve any question in that. And torque speed calculations, starting and speed control of induction motors. And in that, exclusively, V/F control is very important. That's very popular technique, that's why. And single phase induction motor, obviously analysis of single phase induction motor, why they are non-self-starting and what are the problems associated with that, how to make it self-start, equivalent circuit representation, how to calculate the current, power, and forward, backward torque, all those things you need to emphasize on it. Next, in DC machines, especially I'm going with DC motors, torque and speed calculations mainly. Reason is, I'm not putting DC generator because DC generators are rare in usage practically. DC motors have more applications than DC generators. So give more emphasis to DC motor speed control, their torque calculations and speed calculations topics mainly. I'm not telling that don't read these generators, you have to give, but compulsory, give more stress to these particular topics. Next, when it comes to synchronous machines, armature winding, very important topic. Even though it's not specified in the syllabus, many times it came in the gate. KP, KD, winding factors, all these things, EMF equations, those calculations are very important. And regulation and parallel operation. This is very important topic in synchronous voltage regulation methods. Of course, you may not get big numericals on that, small numericals, and the theory also very important. You should be. And now the thing is, these multiple select choice questions also are there, and parallel operation. And load sharing, parallel operation, very important. Why parallel operation important means that basically in all power plants, all the alternators are operating in parallel. And load sharings, P and Q load sharing, how they are. And you should know the effect, the behavior of a DC, synchronous generator with respect to change in excitation, with respect to change in mechanical input. V inverted V curves, very important. That behavior you have to know. All the concepts, characteristics of synchronous generators. Next, when it comes to motors, same logic. P and Q calculations as well as torque calculations of synchronous motors. And finally, you have to know all the loss calculations, particularly iron losses calculations, hysteresis eddy current losses, how they vary with change in V, with the change in frequency, like that for all machines, not only one machine, because it's a common data given, common line given in the syllabus. Types of losses and deficiency calculations. And don't think these are only the important things. When you keep reading the questions and when you solve all the previous question papers of GATE, you will understand. Once read the syllabus, previous Made Easy will give you very clearly in their book all the previous question paper with syllabus, with weightage, everything will be before you. So see the syllabus first, read the syllabus and see the year GATE paper, how questions are asked, what is the question. So then you will get an idea after solving all the previous 15 to 20 year papers. Finally, you will get a conclusion. These are the areas the questions are asked. Even though not specified in the syllabus, these questions came, and more stressed questions are these. You will come to an idea for definitely. You will know the boundaries, how to make the preparation. So finally, I wish you all the very best for all your GATE preparations. Thank you very much. Hi everybody, welcome in GATE Conclave 2021. So हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा गेट 2021 होगा उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना। मार्किंग स्कीम में कुछ चेंजेस हुई हैं, क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ चेंजेस हुई हैं, सिलेबस में कुछ चेंजेस हुई हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारा सिलेबस है जैसे कि ट्रांसफार्मर, स्पेशली मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ।
तो जो हमारे सिलेबस हैं जैसे ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन, तो इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं या चेंजेस नहीं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो टॉपिक हमें देखना चाहिए बेसिकली। क्योंकि अभी गेट का जो टाइम है वो टाइम स्पैन बहुत कम है, जो अवेलेबल टाइम है दैट इज़ फिक्स्ड। तो अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो गेट का हमारा सिलेबस है 2021 का। तो इसमें जो एडिशन हुआ है टॉपिक का वो है वेक्टर ग्रुप्स। जो ट्रांसफार्मर में हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ग्रुप्स, वैसे भी मैं आपको बताऊं तो जो ट्रांसफार्मर में हम पैरेलल ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इन दैट केस पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशंस वगैरह जब पढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि सेम फेज में होना चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। अगर 3 फेज की बात करें, जो वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए। तो वो समझाने के लिए वैसे भी वेक्टर ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जो कि 2020 में नहीं था, तो यहाँ पे 2021 में IIT बॉम्बे ने इसको इंक्लूड किया है कि वेक्टर ग्रुप्स वी आर गोइंग टू आस्क। ओके, और अगर रिमूव्ड टॉपिक देखें कि कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में सिलेबस में नहीं लिखा गया है, तो दैट इज इन डीसी मशीन्स स्टार्टर के बारे में नहीं लिखा हुआ है। 2020 में हम देखेंगे तो स्टार्टर लिखा हुआ था, लेकिन गेट 2021 में देखेंगे तो स्टार्टर के बारे में, डीसी मशीन स्टार्टर के बारे में नहीं लिखा गया है। राइट, इंडक्शन मशीन स्टार्टर है, डीसी मशीन स्टार्टर के बारे में नहीं लिखा गया है। ओके फाइन। अब आ जाते हैं जो हमारा गेट का 5 ईयर का जो लास्ट 5 ईयर है उसका जो वेटेज है वो हम देख सकते हैं मार्किंग स्कीम। तो आप देखेंगे जनरली जो 3 to 4 1 मार्क क्वेश्चन रहता है और जनरली 5 2 मार्क्स क्वेश्चन रहता है। राइट, जनरली 4 to 5 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 to 4 1 मार्क क्वेश्चंस। तो ओवरऑल देखेंगे ऑन एन एवरेज तो 11 to 12 मार्क्स के आते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं और कभी इससे थोड़ा कम भी हो जाते हैं। एंड ये जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का, तो बेसिकली 2 तरह के पैटर्न पूछे गए थे, इस बार एक नया ऐड हुआ है। तो जो 2 तरह के पहले पैटर्न थे उसमें से हम जनरली जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते थे वो होते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर एक ही होता था। तो इसको आप ऐसे समझिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल करेक्ट। राइट, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आर देयर। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें से इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब एक चीज और मैं आपको बता दूं जिससे हमें ये भी आइडिया लग जाता है बेसिकली कि हमारा जो गेट का क्वेश्चन होता है वो गेट का क्वेश्चन अब मतलब कैसे उसको पढ़ा जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें। तो फॉर दैट व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि कभी भी गेट के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट या बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसमें कोई टेस्ट हो रहा है तो बेसिकली उसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और टेस्ट से जब डेटा आ रहा है, जैसे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बातें कर लें ट्रांसफार्मर में, तो जो डेटा आ रहा है वो डेटा को फाइनली जो हम कंप्यूटेशन पार्ट होता है कि कैलकुलेट करके हमें क्या कैलकुलेट करना है और वो कैसे कैलकुलेट करना है। राइट, या कोई इंफॉर्मेशन है जैसे वोल्टेज रिलेटेड कुछ बातें, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं एक ग्राफ इज गिवन 2014 का क्वेश्चन है जिसमें कोर लॉसेस अपॉन फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे है और नीचे फ्रीक्वेंसी है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी नीड टू कैलकुलेट बेसिकली एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस एट 25 हर्ट्ज। तो अब आप बताइए पहले कि ये क्वेश्चन देख करके जैसे मैं आपसे पूछूं कि यही क्वेश्चन क्यों आया गेट में, तो सिंपल सी बात है, जैसे सिलेबस में OC/SC टेस्ट, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, तो जब ये टेस्ट है तो इससे हमें कहीं ना कहीं जो कांस्टेंट लॉसेस हैं वो हम OC टेस्ट से पता कर लेते हैं। इतनी बातें ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैसे कांस्टेंट लॉस में एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों होते हैं, तो बेसिकली हम इन दोनों को अगर सेपरेट करना चाहें तो क्या करते हैं, तो तब आपको आंसर मिलता है कि ओके, जब दोनों को सेपरेट करना चाहें तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेकर के कोर लॉस मेजर करते हैं डिफरेंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी से, फिर उसका ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर हम सेपरेट करते हैं दोनों को, या किसी और भी फ्रीक्वेंसी पे हमें पता करना होता है तो हम उस फ्रीक्वेंसी से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो अब क्या था, ये एक न्यूमेरिकल है, इट्स ओके, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है ना, लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन आया क्यों या इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं गेट में, ये चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं चीजों को कि अच्छा ये चीज हमें पढ़ाया गया है या
ये चीज़ हम जानते हैं तो इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कोर लॉस भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं। तो गेट में बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस, जो भी हम पढ़ते हैं उसका बेसिकली उससे क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशन कैसे होगा। तो ओवरऑल सब कुछ आते हुए भी दो चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगा, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं तो गेट में बहुत अच्छा स्कोर लाया जा सकता है कम से कम टाइम में, स्पीड और एक्यूरेसी, राइट। अब आ जाते हैं, तो इसमें क्या था, एक ही आंसर आपके लिए ये करेक्ट है, बाकी जो बी ऑप्शन है बाकी सब गलत है ना। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन मैं अब इसको बोलूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सिंगल करेक्ट। क्यों? क्योंकि इस बार गेट 2021 में आईआईटी बॉम्बे ने अनाउंस किया है अपने नोटिफिकेशन में कि इस बार हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और पूछने जा रहे हैं, जिस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जस्ट लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी उसके भी 4 ऑप्शंस होंगे और आउट ऑफ 4 ऑप्शंस मल्टीपल सेलेक्ट यानी कि मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें फुल लोड स्लिप भी पूछा है, टॉर्क फुल लोड पूछा है ना, स्टार्टिंग टॉर्क, ये सब देखिए ऑप्शंस में है। तो जो भी डेटा है इस डेटा की हेल्प से हम कैलकुलेट करके ये सारी वैल्यूज पता करेंगे और पता करने के बाद अगर हमें लगता है कि हाँ ये वैल्यू इतना सही है, ये वैल्यू करेक्ट है, ये वैल्यू करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो हम सारे टिक कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन के केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ABCD चारों ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। तो अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चारों करेक्ट हैं, लेकिन अगर हमने 3 ही करेक्ट किए तो क्या होगा। तो एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता दूं, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे ने मेंशन किया है कि जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो सारे आपको टिक करने हैं। अगर आपने कम कर दिए तब भी 0 मिलेंगे, अगर आपने इनकरेक्ट को टिक कर दिए तब भी 0 मिलेंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे आपको, जो अलॉटेड मार्क्स हैं तभी मिलेंगे आपको जब आप चारों ही करेक्ट ऑप्शंस को टिक करते हैं, अदरवाइज आपको 0 मिलेंगे, राइट। और पार्शियल मार्किंग भी नहीं है कि आपने 2 करेक्ट किए और बाकी नहीं किए तो 2 उसको वेटेज को 2 से कुछ डिवाइड करके और आपको मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, तब भी 0 ही मिलेंगे। तो ये तो हो गया मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। इसी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन मैंने पुट किया है कि जैसे एक स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर है तो उसमें जो RMF होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर जैसे फेड किया हमने 3 फेज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम इन 3 फेज वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, तो उससे जो RMF सेटअप होता है, फिर रोटर का मूवमेंट होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि उस फील्ड की जो स्पीड होगी विथ रिस्पेक्ट टू रोटर कितना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड कितना होगा, या रोटर की फील्ड की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर कितना होगा। तो ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, तो हम ये देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में ये ऑप्शंस कौन कौन सही बैठ रहे हैं, राइट। तो फिर जब हम डिस्कस करेंगे देखेंगे तो ये चारों के चारों ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट है। और जब चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है तो हमें चारों ही टिक करने पड़ेंगे, यानी वहां फिल करने पड़ेंगे वह ABCD। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो हमें वहां पे टिक करने होंगे ABCD, यानी कि चारों ही करेक्ट है। अगर हमने एक भी उसमें से कम टिक किया तब भी हमें 0 मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, राइट। और ये तो हो गया मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो कि इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है। वन मोर टाइप इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप कैसा होगा, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जैसे हमें लाइन वोल्टेज पूछा गया है, तो अब ये सब कैलकुलेशन करने के बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं कि लाइन वोल्टेज की वैल्यू सपोज इतनी आए। अब जो भी वैल्यू आई है और लिखा है 2 डेसिमल प्लेसेस मेंशन कर दिया उन्होंने, तो हमें क्या करना है, पॉइंट के जस्ट डेसिमल प्लेस के 2 डिजिट तक हमें जाना है और जो हमारा आंसर है वो लिखना है। फिर कई बार डर लगता है कि इसमें हमारा आंसर ये है, रेंज कुछ और हो, तो मैं आपको इस मामले में थोड़ा एश्योर कर दूं कि रेंज इसमें इतना सफिशिएंट होता है कि आपके आंसर सही होंगे, गलत होने की चांसेस बहुत कम होती है। एक्सेप्शनली कभी ऐसा होता है कि रेंज बहुत कम हो, लेकिन जनरली आपको रेंज इतना सफिशिएंट दिया जाता है कि आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे अगर आपने सही से कैलकुलेट किया है और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हुआ है और कॉन्सेप्ट भी आपके सही लगाए हैं, राइट। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस वगैरह के बारे में। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं,
क्वेश्चन को सिर्फ गेट में सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसी टाइम में सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना है, यानी कि स्पीड और एक्यूरेसी। और ये स्पीड और एक्यूरेसी को आप अच्छा तभी कर सकते हैं जब आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को अगर 2-3 मेथड से किया जा सकता है तो विच मेथड इज सुटेबल फॉर यू, कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आप कहीं ना कहीं स्पीड भी अच्छी होगी, वहां भी एज ले सकते हैं और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। तो फॉर दैट आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, बहुत ही क्लियर होने चाहिए, राइट। एंड अब आ जाते हैं जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इन ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन है, राइट। तो जो ईएमएफ इक्वेशन है उसमें क्या क्वेश्चन आता है और किस टाइप के आ सकते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन वी ऑल नो दैट √2π, राइट, F इंटू फाई एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये ईएमएफ इक्वेशन है। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी टर्म है जो कि सप्लाई अगर चेंज करेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो चेंज हो सकता है। सिमिलरली जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम पीक फ्लक्स है वहाँ पे, तो फ्लक्स डेंसिटी यानी कि एरिया यानी कि डिज़ाइन। तो अगर हम कोर की पैरामीटर्स जो है उसका लेंथ या एरिया चेंज करेंगे या मटेरियल चेंज करेंगे तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। वैसे ही टर्न की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा या कम करेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो दीज आर द न्यूमेरिकल बेसिकली जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। दूसरा सेकंड पॉइंट आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशन देखिए सिंपल है, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, या कभी कभी नीचे नो लोड भी लिखते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू नो लोड माइनस फुल लोड या जो भी रेटेड वैल्यू है डिवाइडेड बाय रेटेड। तो आप नीचे रेटेड लिखा करिए तो वो करेक्ट होता है। तो अब क्योंकि अगर नो लोड पे रेटेड है तो नीचे आप नो लोड वाली वोल्टेज लिखेंगे, अगर फुल लोड पे रेटेड है तो नीचे आप फुल लोड वाली लिखेंगे। अल्टीमेटली हमें मतलब है नीचे क्या लिखें हम, रेटेड वैल्यू लिखें, राइट। तो अब देखिए, अब इसमें रेगुलेशन में नो लोड माइनस फुल लोड, तो अगर फुल लोड वोल्टेज गिवन है कि ये रेटिंग है और फुल लोड पे ट्रांसफार्मर अपना वोल्टेज दे रहा है, तो नो लोड यू हैव टू कैलकुलेट, और नो लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको केवीएल लगा करके सर्किट को सॉल्व करना पड़ता है ना, सिंप्लीफाई करके। जो सिंप्लीफाइड सर्किट है ना, इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का, वो लेकर के जनरली हम ई कैलकुलेट करते हैं, या फिर अगर और भी वैल्यूज गिवन है। अब ये भी पॉइंट होता है कि हम कौन सा सर्किट लगाएंगे, जैसे कैंटिलीवर सर्किट लगाएंगे या फिर एग्जैक्ट सर्किट लगाएंगे, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट आफ्टर वन फर्स्ट एजम्पशंस लगाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंसेस कि आपको एज देगा कितना जल्दी आप सोच पाते हैं उधर कि कौन सा सर्किट लगाना है। तो वो तो जनरली क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस किया जाता है, तो फिर आप फटाफट समझ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जनरली ये रेगुलेशन मैंने क्यों कहा, रेगुलेशन सिर्फ एक टर्म छोटा सा है, हम इजीली समझ जाते हैं, लेकिन इस रेगुलेशन के आसपास बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप केवीएल जब लगाएंगे, जब नो लोड वोल्टेज भी कैलकुलेट करेंगे, इफ फुल लोड इज गिवन तो ड्रॉप करके फिर आपको जो भी लोड वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, वो निकालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा केवीएल वाला पोर्शन यहाँ पे यूज हो जाता है, इंपीडेंसेस यूज हो जाते हैं। अगर रेटेड करंट पे पूछा है तो वो रेटेड करंट को यूज करना होता है। ये सारी चीजें आ जाती है उस रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। इतना ही नहीं, फिर कई बार होता है मैक्सिमम रेगुलेशन, मिनिमम रेगुलेशन, जीरो रेगुलेशन, तो ये काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन करने को आ जाता है। Then the most important point is efficiency and maximum efficiency। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि efficiency निकालने के लिए, जैसे सपोज आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, तो आपको आउटपुट उसकी रेटिंग कितनी होगी, है ना। अगर केवीए में है तो फिर पावर फैक्टर का कैसे यूज करना है, लॉसेस है तो आयरन लॉसेस का कैसे यूज करना है, कॉपर लॉसेस का कैसे यूज करना है, या और कोई लॉसेस होते हैं नहीं होते हैं, इसमें वेरिएबल लॉस कौन सा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी। तो यहाँ पे काफी सारा क्वेश्चंस आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर में भी काफी सारा क्वेश्चन यहां से बन जाता है और काफी कवरेज भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉसेस को पता करने के लिए द नेक्स्ट टॉपिक इज ओसीएससी टेस्ट। तो फिर ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी हमें पढ़ना पड़ता है, कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं, फिर इनसे हमें कौन कौन सी वैल्यू मिलती है, फिर ये जो वैल्यू मिलती है उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा रेगुलेशन पता करने के लिए कौन से टेस्ट की जरूरत है, ओसी टेस्ट, एससी टेस्ट, बोथ, नन। तो अब इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि बेसिकली शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो हमने कैलकुलेट किया है पैरामीटर, वो रेगुलेशन के लिए सफिशिएंट है या
या पोसी टेस्ट की भी ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाइए ऑटो ट्रांसफार्मर। अगेन ऑटो ट्रांसफार्मर पूरे ट्रांसफार्मर का सबसे सिंपल टॉपिक होता है, जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी फिक्स्ड है, राइट। जैसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, उससे ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन कर रहे हैं, तो पूछ लिया जाता है कई बार कि उसकी रेटिंग क्या होगी, या कॉपर सेविंग कितना होगा अगर सेम रेटिंग है ना, कंडक्टर कितना यूटिलाइज हो रहा है, या फिर लॉसेस कितने होंगे, एफिशिएंसी कितनी होगी इफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी हुई है, उससे जो कि हम क्या कर सकते हैं, उससे हम लॉसेस निकाल सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को रिलेट करके एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, और वो इजीली कैलकुलेट भी किया जा सकता है। देन कम टू 3 फेज ट्रांसफार्मर, और 3 फेज ट्रांसफार्मर सुनते ही जनरली बच्चे डर जाते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, प्लीज ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत कम एफर्ट में आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखेगा, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, लेकिन उसमें बहुत ही सिंपल होता है। क्यों? हम डर क्यों जाते हैं? तो पहले मैं आपको बता दूं कि 3 फेज में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो याद रखिए जो 3 फेज ट्रांसफार्मर बना हुआ है, तो उसमें जो टर्न्स पर फेज है दोनों तरफ, उसका रेशियो तो हमें आता है जैसे हम सिंगल फेज में यूज करते हैं। और जब टर्न्स पर फेज को हमने यूज करना सीख लिया, फिर इस तरफ से उस तरफ चले गए पर फेज वोल्टेज में, है ना, फेज में, और फिर आप लाइन में चले आइए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट, इफ देयर इज स्टार कनेक्शन। डेल्टा में है तब तो सीधा सीधा वही हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक और बात अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, अगर कोई फीडर लगा हो या कोई लोड लगा हो, लोड स्टार में कनेक्ट कर लें, ठीक है, तो इनको अगर आपको रेफर करना हो इधर से उधर, तब आप डरते हैं, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। जो लाइन वोल्टेज होता है, उस लाइन वोल्टेज का रेशियो ले लीजिए, उसका स्क्वायर, जो हम नॉर्मली k² या a² एज्यूम करते हैं, आप उस लाइन वोल्टेज के रेशियो को वहां पे यूज करें जब हम लोड को 3 फेज में लोड को हम इधर से उधर रेफर कर रहे हैं, यानी HB से LB या LV से HB। स्पेशली लोड जब स्टार कनेक्टेड हो, और अगर डेल्टा कनेक्टेड लोड हो तो उसका इक्विवेलेंट स्टार ड्रॉ कर लें और फिर उसको आप रेफर कर दें LV रेशियो से, तो हमारा काम बन जाता है। तो किसमें फीडर में हम लाइन वोल्टेज का रेशियो लेंगे, और लोड में भी हम लाइन वोल्टेज का रेशियो। तो देखिए अब 3 फेज इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, राइट। तो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज है ना, इधर कितना करंट होगा, उधर कितना होगा, इन्हीं सब में क्वेश्चन आता है। दूसरा, कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया, वेक्टर ग्रुप जो कि देखिए नया ऐड हुआ है, तो ये जो वेक्टर ग्रुप है, दिस इज रिक्वायर्ड बेसिकली टू अंडरस्टैंड पैरेलल ऑपरेशन प्रैक्टिकली। तो वेक्टर ग्रुप अच्छा है, ऐड हो गया, जब आप समझेंगे, और ये इतना आसान होता है वेक्टर ग्रुप, एक बार आप समझ जाएंगे तो एसी से जो डर होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो डर खत्म हो जाता है। तो इवन आई वुड सजेस्ट यू कि वेक्टर ग्रुप बहुत अच्छे से समझिए। एंड देन come to the DC machines. So in DC machines, I think in entire machine, the easiest topic is DC machine. तो जो पहला पोर्शन है, पहला पॉइंट है, दैट इज EMF इक्वेशन। अगेन EMF इक्वेशन में आपको देखना होगा, स्पीड है तो वो RPM है या रेडियन पर सेकेंड में है, राइट। फ्लक्स है तो वो कौन सा फ्लक्स है, राइट। तो इस तरह से हमें वो चीज़ देखनी होगी। सेकेंड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीसी मशीन में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ जाते हैं और वो वेव फॉर्म वगैरह आपके दिमाग में रहता है, जो कि सब रिलेटेड है, एक समझ में आ गया तो सभी रिलेट हो जाते हैं, राइट। तो इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, टॉर्क इज इक्वल टू k phi ओमेगा, राइट, एंड EB इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू k phi ओमेगा एंड टॉर्क इज इक्वल टू k phi IA। बस ये दो फार्मूला आप दिमाग में रखेंगे जब सॉल्व करेंगे, और इसी के हेल्प से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिलेट हो जाती है एंड सारे न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं डीसी मशीन में। तो ओवरऑल डीसी मशीन में 3 फार्मूला इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, थोड़ा सा आर्मेचर रिएक्शन का पोर्शन है, 1-2 पॉइंट है, बट दैट इज नथिंग, दैट इज एम्पियर टर्न ओनली। एम्पियर टर्न पर पोल आप देखेंगे वो होता है फार्मूले में, हम डर जाते हैं, पता नहीं क्या है, बस उसी को कंडक्टर बाई 2 लिखा होता है, IA/A लिखा होता है, लेकिन वो एम्पियर टर्न ही है, राइट। अच्छा, तो डीसी मशीन में बात कर रहे थे EMF इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव फॉर्म वगैरह, टॉर्क एंड स्पीड कैलकुलेशन जो अभी मैंने बताया, T इज इक्वल टू k phi IA, EB इज इक्वल टू k phi ओमेगा, दोनों में k phi कॉमन है। तो जब भी स्पीड, टॉर्क, करंट और करंट एंड EB, ये इन सबको जब भी रिलेट करना हो तो दिस 2 फार्मूला इज मोर देन सफिशिएंट।
एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो स्पीड कंट्रोल कितने तरीके का है, उससे न्यूमेरिकल कितने टाइप के आ सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड, राइट। नाउ कम टू इंडक्शन मशीन। सो इन इंडक्शन मशीन शुरू करते हैं स्लिप से, देन स्लिप स्पीड क्या होता है। अब जो रोटर होता है उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके करंट की वैल्यू क्या होगी, पावर फैक्टर क्या होगा। तो दीज आर द बेसिक टॉपिक जो कि जहां से शुरू होता है न्यूमेरिकल बनना, जो कि गेट में काफ़ी पूछा जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज पावर फ्लो। इनफैक्ट जस्ट आई वुड सजेस्ट यू कि इंडक्शन मशीन में जो पावर फ्लो है, जैसे इनपुट पावर हमने कितना दिया एंड पीजी कितना होगा, एंड फिर एसपीजी क्या है, फिर जो रोटर कॉपर लॉसेज होते हैं, देन आउटपुट पावर, शाफ्ट पावर। तो अगर ये पावर फ्लो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है एंड उसी से टॉर्क निकालना, और स्पेशली इंडक्शन मशीन में जो ग्रॉस टॉर्क होता है, एयर गैप टॉर्क होता है, दैट इज इक्वल टू द डेवलप्ड टॉर्क, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये पावर और टॉर्क के भी सारे न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एंड देन कम टू एफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी है बेसिकली आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जब आपने पावर फ्लो समझ लिया तो एफिशिएंसी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आ जाते हैं इंडक्शन मशीन में नेक्स्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और टफ पोर्शन है, एंड दैट इज स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें कई बार VYF कंट्रोल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अच्छे अच्छे उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएं ताकि वो कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। एंड देन द फोर्थ पॉइंट दैट इज अगेन वेरी इजी बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टर। तो जो इंडक्शन मशीन का स्टार्टर होता है, अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग हो, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग हो, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन फार्मूला पुटिंग पूछे जाते हैं। तो आप उसको भी थोड़ा सा देख करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ करके जाएंगे, तो यू कैन इजीली स्कोर मार्क ओवर देयर, राइट। देन आ जाइए सिंक्रोनस मशीन में। तो इन सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करते हैं ईएमएफ इक्वेशन अगेन, और उस ईएमएफ इक्वेशन में जो कॉर्डिंग फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये कॉर्डिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, एम बीटा क्या होता है, फेज स्प्रेड क्या होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए उसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, जो कि क्लास में सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो वो सारी चीजों को यूज करना आपको आना चाहिए, और एक बार वो समझ गए तो अगेन सिंक्रोनस के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। देन द सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेशन। अगेन रेगुलेशन, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड या रेटेड, जो मैंने समझाया था आपको, यहां भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें EF यानी नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज माइनस V रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय V रेटेड वोल्टेज। तो अब इस केस में फिर से अगर V दिया हुआ है, मान लीजिए रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है, तो EF वी हैव टू कैलकुलेट। तो अगेन हमें कहाँ जाना होगा, KVL सॉल्व करना होगा, सिंक्रोनस इंपीडेंस वगैरह यूज करना होगा, है ना। तो रेगुलेशन का मतलब सिंपल EF माइनस V बाई V यहां नहीं है। रेगुलेशन का मतलब है कि क्या हमें KVL सॉल्व करने आता है या नहीं, क्या हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं या नहीं। इवन कई बार पर यूनिट यूज करते हैं तो और आसान हो जाता है, नहीं सॉल्व हो रहा, फेजर यूज करिए तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो रेगुलेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। देन कम टू द सिंक्रोनाइजेशन मेथड्स एंड कंडीशंस। देखिए, जब भी हम किसी सिंक्रोनस मशीन को बस बार से कनेक्ट करते हैं, राइट, या फिर कहीं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो फिर हमें उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, वोल्टेज कैसा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, राइट, पावर ज़रूरी है सेम होना चाहिए या नहीं, फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फेज क्या होना, ये सारी बातें उधर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें देखना होता है। और किस किस मेथड से हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जैसे लैंप मेथड होते हैं, है ना, सिंक्रोनाइज जो मीटर करके होता है, तो हम इन सब का यूज़ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, जो इसमें यूज होता है एक्टिव और रिएक्टिव पावर या फिर टोटल पावर कैलकुलेट करने का। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पावर सिस्टम या पावर ग्रिड जो भी आप देख रहे हैं, बेसिकली जनरेटिंग स्टेशन से सब कनेक्टेड है, और जनरेटिंग स्टेशन में क्या है, हमारा अल्टरनेटर है, और वही अल्टरनेटर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर वट एवर वी रिक्वायर, जितना हमें चाहिए वो सब हम वहाँ से लेते हैं, और फिर जब बैलेंस करना होता है तो उसको अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, ताकि हम रिएक्टिव पावर को मैनेज कर सकें। और जब प्रॉब्लम होती है, कई बार पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, तो कैपेसिटर बैंक तो सबको पता है, लेकिन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर भी कहीं ना कहीं कंडेंसर की तरह काम करता है, और उसके हेल्प से भी हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम अपने रिएक्टिव पावर को मैनेज करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी भी
अगर हम देखें, अगर सिंक्रोनस मशीन यूज़ किया गया है कुछ भी, तो पावर के क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो भी हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे और उस चीज़ों को जानेंगे, जानना चाहिए, और उससे न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस हैं। कितना रिएक्टिव पावर था, एक सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट कर दिया, उसकी रेटिंग इतनी थी, तो अब नया पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले कितना सपोज दिया हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड कम टू द लॉसेज एंड एफिशिएंसी पार्ट, जो कि हर मशीन में इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट, जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो सिंक्रोनस मशीन के होते हैं काफ़ी आसानी से सॉल्व होते हैं, और वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व की अगर एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं तो पावर फैक्टर में क्या होगा, जनरेटर है तो क्या होगा, मोटर है तो क्या होगा, ये सब चीज़ें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर फिक्स्ड है और हमने एक्साइटेशन बढ़ा दी, कई बार एक्साइटेशन को कांस्टेंट करते हैं, प्राइम मूवर जो इनपुट दे रहे हैं उसको चेंज करते हैं, तो उससे क्या होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी कम होता है, अभी देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम प्रैक्टिस इतने अच्छे से करें कि हमारी स्पीड भी अच्छी हो, एक्यूरेसी भी हो। लेकिन ये तभी होगा जब आपको बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करेंगे, वो आएगा। और उसके लिए पर्सनली आई विल सजेस्ट यू कि आप मेडिजी के जो लेक्चर्स हैं वो देखिए, अटेंड करिए, और जो भी मटेरियल हैं टेस्ट सीरीज दीजिए। तो बेसिकली जो आपका फ्लो है पूरा ही गेट ओरिएंटेड हो जाएगा और इजीली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू सो मच।